Hello everyone, welcome back to EduTap. Myself Jalaj Nagpal, and mind you, my friends, as you all know, RBI Grade B 2023 results are out. And continuing with our success story sessions, today we have Mr. Ankit Baluni with us, and he has recently cleared RBI Grade B 2023 exam. So first of all, Ankit, congratulations from the entire team of EduTap. Thank you, sir. So first and the foremost question to you, Ankit, is that like I will ask multiple questions to you. बहुत सारे questions है. But the first and the foremost question, like what is the feeling now once you saw your final result in that holy PDF? I would say, कैसा लग रहा है अभी? जोश कैसा है? सर अभी तो हैप्पीनेस वाली फीलिंग है और रिलैक्स्ड भी है, रिलीव्ड भी है कि अब आगे और तो एग्जाम फिलहाल कोई नहीं देना है। तो That is the you are on cloud nine, हाँ, right? हाँ सर। So, like when you saw the result, like what were the emotions going on? Like, can you please take me through your emotions? Like, जब result आया, how was the overall feeling? One more time, just try to express. सर रिजल्ट मैंने देखा था सर, सारी फैमिली हम साथ में ही बैठे थे। तो Uh, जब रिजल्ट मैंने रोल नंबर देखा तो mm, वही हैप्पीनेस वाली फीलिंग है। फिर बाद में धीरे धीरे फीलिंग जब कम हुई तो फिर ये लगा कि हाँ चलो, जिसके लिए पढ़ रहे थे अब हो गया। so all the efforts have paid up, right? हाँ हाँ। So, Ankit, first and the foremost thing, because our viewers are watching you for the very first time, I request you to please give your brief history. Like, कहाँ से सारी शुरुआत होती है, 11th 12th में क्या था, graduation, your work ex, anything like that. So please give me your brief history in the best manner as possible. Sir, I'm basically from Pauri Gadwal district of Uttarakhand, and Hmm. I have done my schooling till 10th from here itself. And then for 11th and 12th, I went to Yamunanagar, Haryana, where my Taiji lived, and I Hmm. did my 12th from there. And then for my BTech, I did my BTech in Electronics and Communication Engineering Okay. from Kumaon Engineering College, Dwarhat, Almora. Okay. Yeah, and then after my BTech, I got placed in TCS. There I Okay. worked for almost 2 years. Mm-hmm. Then I left my job, gave 3 attempts at UPSC, in which I Okay. wrote 2 mains. Mm-hmm. And then when I thought that I will have to give other exams as well, as Mm-hmm. UPSC was not, I was not getting interview calls in UPSC. Mm-hmm. So I thought to give other exams. Then started giving RBI's first attempt pre-fail, then gave SSC, got Okay. a job as AAO, Assistant Audit Officer in Okay. So you were like a in working aspirant. Yeah, I'm working currently in IAAD, Indian Audit and Accounts Department, as a Okay. AAO, Okay. and I'm posted in Agartala. Okay. 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 So this was your which attempt of RBI? Like the final It was attempt? no, it was my third attempt. Okay, okay. So first attempt you were not able to clear, second same, and third May you have just hit a sixer, right? Means, uh, So if I just conclude your brief summary, you are a science graduate, yes, that too from a, I would say, uh, I would say, a local college somewhere in Uttarakhand. After that, you have given your UPSC attempts, in total 3 attempts, and after that you went to TCS, and then you quit your job in TCS. Then you appeared for, I would say, SSC, and then you finally made it to RBI. Quite comprehensive, I would say, right? yeah. TCS one was earlier than UPSC. Okay, First I okay. So did first, TCS, okay, okay, my bad. So first you are graduated, then TCS, then and then UPSC journey. So yeah. still a quite comprehensive journey, I would say. Congratulations one more time, because this looks like a very long journey to have. Now I will come to phase one, phase two, and interview part later on. But first, tell me, like, there is a very, I would say, doubt in the engineering students. Like, if they see RBI Grade B as a job, it is somewhere related to commerce, it is somewhere related to finance. How did you fight this barrier of having engineering background? How did you cover finance? What were your overall journey being an engineer student? I think if we look at the exam, then anyone can clear with a right preparation. So it's Hmm. not about in the field, in which field are you graduated in. So if you are willing to give the exam and willing to prepare for the exam, Hmm. then your background does not matter. Okay. So basically, अगर engineer students भी है, so they do not have to fear from anything. नहीं, There is a very, like English में बोलते हैं, right? Engineers can do anything.
So हाँ। that thing is true over in RBI as well. Kudos. Good, good. Now, when it comes to your college, you mentioned that it is somewhere in Almora, Uttarakhand. यस। Like there are many students who have a self doubt. Ki we do not have a good college background, like we do not have IIMs and IIT degrees. So did you have this self doubt in you? और अगर था तो आपने इसे कैसे ट्रिगर किया? मतलब क्या इसने आपको आपकी प्रिपरेशंस को हिंडर किया कि आप एक लोकल कॉलेज से हो, आप एक बड़े कॉलेज से नहीं हो? ऐसा सर, ऐसा कोई सेल्फ डाउट तो नहीं था। ये इस पे हम्म ये भी डिपेंड करता है कि आपके पीयर्स कैसे हैं। आई हैव गॉट अ वेरी गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, सो हम्म वी हैव स्टडीड टुगेदर एंड प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशंस टुगेदर। तो ऐसा हम्म सेल्फ डाउट वाला पार्ट तो नहीं था। इसके अलावा हम्म फैमिली सपोर्ट भी अच्छा था। तो ऐसी जो प्रिपरेशन में आमतौर पे कभी कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, वैसी दिक्कतें नहीं आई। आई वाज लकी ना। Nice, nice, very nice. Family support is very, very important because sometimes the pressure from the society itself, it's very, very big. Now, when it comes to your UPSC background, like you have mentioned that you have done some, you have invested rather 3 years in UPSC. How did your UPSC preparation helped you in RBI? Like I will come to phase one, phase two, and all this part. But जो UPSC के students है, did plan like they did plan for UPSC, but if they are not able to get success in UPSC, can they come and appear in RBI? Surely they can, because when you are studying for UPSC, you are studying a diverse range of subjects, Hmm. and you get an understanding of almost everything, even the surface level understanding, but you get a fine understanding of almost all topics. So if we come to RBI, in RBI we are studying ESI. So if you have prepared well for GS3 in UPSC, तो Hmm. आपका सिलेबस ESI का ऑलमोस्ट कवर्ड है। ऊपर से अगर Hmm. आपने मेंस की तैयारी की है, तो Hmm. जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें आपको बहुत मदद हो जाएगी, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव हो या ईएसआई डिस्क्रिप्टिव हो। फिर एफएम की जब आप थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तो पढ़ने Hmm. में समझने में आपको एफर्ट देना है, लेकिन फिर जो उसका लिखने वाला पार्ट है वो आपका सॉल्व है कि कैसे आंसर क्रिएट करना है, कैसे Okay. प्रेजेंट करना है। तो ये हेल्प तो होती है सर। मतलब अगर मैं एक बात में बोलूं, अगर आपने यूपीएससी में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है और वहां पे अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आरबीआई में मिल सकता है, राइट? बिल्कुल सर, तो मिल सकता है। समवेयर इट इज ट्रू, लाइक मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, राइट? यस सर। Cool. So thank you on that particular note because that will address multiple doubts of the students who are watching this video. One more question before I come to my main interview part. Like, how did you manage your time? Being a working aspirant, definitely it is lot of hectic stuff. Multiple things have to be done. Personal life भी होती है, professional life भी होती है, study life भी अगर आपकी है, तो सब कुछ manage कैसे हुआ? सर, ये वर्किंग में ये वाली टाइम मैनेजमेंट वाली दिक्कत तो होती है, क्योंकि हम्म वर्किंग के अलावा, ऑफिस के अलावा आपको जितना टाइम मिल रहा है उसमें हम्म आपको पढ़ना ही है। क्योंकि वैसे ही कम टाइम मिलता है, उसमें भी आप वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और ट्रू इवन ऑफिस के बीच में टी ब्रेक्स हैं या हम्म लंच ब्रेक है, उसमें भी जो टाइम मिल रहा है उसमें भी आप थोड़ा पढ़ लीजिए। तो लेकिन आपने इसमें, मतलब देखा जाए तो पूरा जो भी आपके पास फ्री टाइम था आपने उसको आरबीआई पे ही डिवोट करा। हाँ, स्पेशली नोटिफिकेशन आने के हाँ, बाद मेरा प्रॉपर आरबीआई वाला वो शुरू हो गया था। साइकिल। और इसमें एक ये भी पॉजिटिव रहा कि जब आपके पास टाइम कम होता है तो वेस्ट भी कम होता है। तो हाँ, आप वेरी लगे गुड। रहते हैं, आप मतलब जितना मिल रहा है आपको कवर करने में, तो ये फायदा भी हो जाता है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टाइप की वो चीज हो जाती है ना। कूल, सो योर फोकस गेट्स लिमिटेड कि जब भी टाइम या मिल रहा है सिर्फ पढ़ना ही है, सिंपल। That's really very good learning from this point. Now I will come to the main phase one, phase two, and interview part. When it comes to phase one, there are four components we all know: quant, reasoning, English, and GA. Okay. Now, first, let me know your preparation regarding the elephant in the room, which is journal awareness. Because of journal awareness, many people are unable to clear phase one. Because of low score in journal awareness, there are many people or many students are getting demotivated. So what was your strategy first of all, and secondly, what is the smart strategy to follow for the future aspirants when it comes to journal awareness? सर, जनरल अवेयरनेस के सबसे पहले मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। केवल 4 महीने का पढ़िए, और उसमें Okay. भी 3 महीने का अच्छे से पढ़ लीजिए। Hmm. और मेरे जनरल अवेयरनेस में ठीक ठाक नंबर आते हैं प्री में, तो इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। Hmm. केवल 4 महीने का, अगर टाइम है तो फिर 5 महीने का पढ़ लीजिए। Hmm. Hmm. मैंने जनरल अवेयरनेस के लिए जो पढ़ा था वो है, डॉक्टर गौरव गर्ग सर हैं, स्टडी आईक्यू के। Hmm. मैंने उनके क्लासेस से पढ़ा है, मतलब उनका मैंने पेड वो लिया था, करंट अफेयर्स का कोर्स।
तो उन उनसे मैं अच्छा रिलेट कर पाता हूँ। और Okay. इसके अलावा जो फाइनेंस करंट अफेयर्स हैं, वो कृतिका मैम है एडुटैप की, Yeah. वो बड़े अच्छे से पढ़ाती हैं। इसके Hmm. अलावा जो रिवीजन के लिए एडुटैप एकदम प्री से पहले, शायद एक हफ्ते हाँ, या 10 दिन मैराथन्स। पहले हम्म। मैराथन्स कराता है और एक पीडीएफ देता है हाँ जी। उसमें। बूस्टर। बूस्टर्स, हाँ हाँ। बूस्टर्स देता है, तो उससे हम्म। रिवाइज करने में आसानी हो जाती है, कुछ छोटा हो तो। और इससे मतलब इतना करके आप कॉन्फिडेंस से जाइए। ओके। तो हाँ। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो कर रहे हो उसे अच्छे से करके जाओ। हाँ, जो एज कर रहे हो सिंपल एज उसे। दैट। यस सर। ओके। क्योंकि अगर बहुत हर ज्यादा। चीज करने लग गए तो फिर इशू हो जाता है, राइट? हम्म, सो आपके हाँ। अकॉर्डिंग 3 to 4 months इज वेरी गुड रेंज, बट यू हैव टू डू इट ऑन अ गुड रिविजन मैराथन्स, और कृतिका मैम की जो वीडियोज है दैट विल बी हेल्पफुल। यस सर। Cool. So when it comes to quants now, quants and reasoning, these are the two subjects which gives nightmare to the students, and cutoffs are also falling. So what was your strategy again? How did you manage the pressure of quants and reasoning? So sir, if I talk about quants, being an SSC Hmm. aspirant, I have prepared quant for that, and therefore for RBI, I just needed to brush it up. So I brushed it up only through the mock test. I took mock tests for olive board and practice mock, Hmm. and I give around 11-12 mocks. So उसमें क्वांट में मैंने देख लिया था कि मेरे ठीक ठाक कट ऑफ क्रॉस होने वाली Hmm. मार्क्स आ रही है। इसके अलावा रीजनिंग के लिए भी, रीजनिंग इज मीन्स इट्स ट्रिकी इन आरबीआई। Hmm. उसमें Hmm. 3-4 नंबर लाने पे मुश्किल पड़ जाते हैं। तो Hmm. फॉर रीजनिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट what topics you can solve in paper, and you need to Okay. practice more and more questions on that topic. And that also you need to practice from olive board mock test. They are really good quality, so they provide good questions. Okay. So And when it comes to, I would say, English, again, I would think your SSC preparation helped you over here. English sir, I think I have a habit of reading newspapers, Okay. so editorials and all. So English के लिए ऐसी एज सच मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। Hmm. एसएससी वाली प्रिपरेशन ऑफ कोर्स हेल्प करी, तो Hmm. इंग्लिश ऐसे हो गई थी मेरी। Cool. So what is the role of mocks that I can understand now? Can you please यस let me know कि कितने मॉक्स देने चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट स्टूडेंट्स यही पूछते हैं हमसे कि सर 5 मॉक्स दे, 10 मॉक्स दे या 20 मॉक्स दे। तो व्हाट इज अ गुड रेंज ऑफ मॉक्स विच यू थिंक इज इनफ फॉर जर्नल लेवल ऑफ स्टूडेंट? सर, मॉक्स डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपने प्री की तैयारी ठीक ठाक पहले से शुरू कर दी है, हम्म। तो आप प्रैक्टिस मॉक और वॉलीबॉल दोनों के 10-10 मॉक्स दे के, 20 मॉक्स दे के चले जाइए। फिर ओके। लेकिन अगर आप 10 मॉक भी देते हैं, तो आपको अपनी तैयारी का ठीक ठाक अंदाजा हो जाता है कि कहाँ पे कम पड़ रही है, कहाँ पे ठीक ठाक है। तो वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। And Ankit, I have seen like maximum students they focus on the score, like score pe, they do not focus on analyzing of mocks. So what is your हम्म। thought on that? Like, do you have to invest your time in analysis, or do you have to invest your time in, I would say, in getting good numbers or something like that? I think analyzing mocks is more important than Hmm. attempting. Means after Okay. attempting, you need to understand that in which areas are you strong and in which areas are you weak. Okay. There are some topics in quant and Hmm. reasoning which are means they are seen as easy topics and they can be scored in exam. Hmm. So you need to prepare them well, so that even if tough Hmm. question comes from that, you need to score them. Like syllogism in Hmm. reasoning, इस बार रिवर्स सिलॉग आ गया था, तो लोग Hmm. सिलॉग प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन Yeah. रिवर्स छोड़ दिया। तो ठीक ठाक मतलब सिलॉग अगर कर रहे हैं तो ठीक ठाक उसे अच्छे से कर लीजिए, ताकि कुछ भी आए तो कर लेंगे उसे। Okay. So, like, can you summarize your overall plan for phase one? Like, because phase one is the real competition cutter. If you see hardly 2% or hardly 1.5% people clear your phase one. So what is the mool mantra? What is the best advice which you will like to give to our students when it comes to phase one? सर, फेज वन के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। Hmm. मीन्स यू नीड टू प्रैक्टिस थ्रू मॉक्स, देन यू नीड टू बी क्लियर फॉर क्वांट्स विच क्वेश्चंस आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट। द आर्ट ऑफ लिविंग क्वेश्चंस बोलते हैं जिसे। Hmm. तो अगर आप हर क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, तो हो सकता है कट ऑफ क्लियर ना कर पाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं होते। सेम Hmm. गोज फॉर रीजनिंग। रीजनिंग में भी Okay. सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं होते। बहुत सारी पजल्स होती हैं 3-4 वेरिएबल वाली, उसमें फंस के कोई फायदा नहीं है। Hmm. तो ऐसे आप सॉल्व करिए जिसमें आप सॉल्व कर पाएंगे, और वो आपको Okay. उसी से पता चलेगा जब आप मॉक लगाएंगे। Okay. इसके अलावा So सर yes, जीके के yes, लिए please. एक बात
जीए के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि जीए में एक तो नॉलेज वाला इशू होता है, एक इशू होता है स्पीड रीडिंग वाला, कि हम्म। लोग 25 मिनट में 80 क्वेश्चन देख नहीं पाते। जो हम्म। वो 80 क्वेश्चन है वो केवल 80 क्वेश्चन नहीं है, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। हम्म। वो लगभग 130 140 क्वेश्चन होते हैं ओके। पढ़ने के लिए। हाँ, तो वो हम्म। मतलब इंग्लिश रीडिंग की अपनी स्पीड और उसकी कॉम्प्रिहेंशन की, उस पर भी काम करना जरूरी है। Hmm. So if I see three pillars are there, if you summarize your overall wordings, first is to practice mocks. Practice makes the man perfect. Second is selectivity, the art of selection. And the third thing was regarding GA, that you need to have good reading speed, because in 25 minutes it's not 80 questions, rather it is more than 100 or somewhere around 130, because multiple statements hote hai. Cool. So I get your strategy now. So that is again a wonderful thing to have. Moreover, viewers, Ankit has scored somewhere around 91, right? यस सर, 91 90। in phase one. That is again a very good score. And he is scoring 91 when the cutoffs are very, very low, less than 60. So that totally depends, like it totally tells you the volume of the strategy which Mr. Ankit is following. Okay. Now I will come to my phase two preparation. Okay. So phase two is the first merit section. After that, we have interview. Once it comes to phase two, let's first start with ESI, that is your economic and social issues. As you said that you have your UPSC background, so definitely some help would have been provided from UPSC. But take me through your ESI journey. Like what was your sources, or what was your strategy rather? How did you plan your ESI preparation? What was your overall way to direct students towards ESI? Sir, for ESI, first we need to cover the static syllabus to understand what the topics are going on in current issues. So, So when it comes to static, जैसे sorry I'm stopping you over here. Static आपका UPSC से हो गया होगा, right? हम्म, So तो उस वही पे मैं पूरा बोलना आपका चाह रहा था। कमांड होगा अच्छे से. हाँ, उस पे मेरा ठीक ठाक कमांड था, तो मुझे वो ओके. पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ओके. अगर ओके. कोई शुरू से प्रिपेयर कर रहा है तो उसे एक बार मतलब ठीक ठाक आइडिया ले लेना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के, इंडियन ओके. इकोनॉमी के खास तौर पर। तो उस ओके. उसका अगर आइडिया आपने ले लिया तो आपको जो करंट में चल रहा है न्यूज़पेपर पढ़ने में आसानी हो जाएगी। कूल. नाउ प्लीज कंटिन्यू, क्योंकि स्टैटिक के रिलेटेड बहुत स्टूडेंट डाउट पूछते, दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड यू. नाउ प्लीज कंटिन्यू. यस. फिर ईएसआई में दो इम्पोर्टेंट चीजें आती है, रिपोर्ट्स और स्कीम्स का। हम्म. तो किसी भी सोर्स से आप रिपोर्ट से स्कीम्स, जैसे मैंने एडुटैप से किया था, हम्म. मैंने प्री के बाद मेंस का क्रैश कोर्स ले लिया था। तो हाँ जी. वीडियोस तो मैं बहुत ज़्यादा देख नहीं पाया था, एफएम हम्म. के लिए मैंने आपके वीडियोस देखे थे। हम्म. लेकिन ईएसआई के लिए जो स्कीम्स और रिपोर्ट्स वाले जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, उससे मैंने स्कीम्स और रिपोर्ट्स पढ़ ली थी। तो स्कीम्स और रिपोर्ट से ही मेजर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और इस बार तो डिस्क्रिप्टिव भी रिपोर्ट से ही आ गया था। हम्म. हम्म. तो वो उसी पे मेजर फोकस रहनी मतलब रहना चाहिए। आपको हम्म. स्टैटिक पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपको आंसर लिखने में या समझने में मदद हम्म. करेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे वो रिपोर्ट्स, स्कीम्स, करंट से ही आएंगे। ओके. सो इसके लिए आपने फिजिकल नोट्स बनाए थे, मतलब? फिजिकल नोट्स सर, हम्म. रिवीजन के लिए मैंने एकदम माइक्रो नोट्स टाइप के, हम्म. जो एक कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात होती है, हम्म. वैसे नोट्स बनाए थे कि एक टॉपिक को लिख के और उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो एक जगह पे लिख के। लेकिन डिटेल्ड नोट्स मैंने नहीं बनाए थे, तो मुझे लगता है मेरे ओके. पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं टाइम था भी कि नहीं था. बहुत ज्यादा डिटेल्ड नोट्स में बना Yes, पाता। working aspirants do have to make sure that they are making short notes, not lengthy notes rather. Cool. So for ESI, like the descriptive thing, like as you mentioned, how did you practice descriptive? Because many students ask me, sir, हम descriptive कैसे start करें, किस पे लिखे, क्या लिखना है, मतलब what is the correct strategy for descriptive according to you? सर, फॉर डिस्क्रिप्टिव आई थिंक यू नीड टू कवर एज मेनी टॉपिक्स एज पॉसिबल। Whatever topics are given in syllabus, you need to know something about everything. And Okay. means what you can do is you can think of any question and then think of few pointers about that. For example, I used EduTap questions for that. The Mm-hmm. EduTap has provided some questions in the end of their document, and then I saw the question and then I thought of writing 8 9 points about that question. Not the Mm-hmm. entire answer, because that would consume more time, but you can think of 8 9 points which you are going to elaborate in the answer. तो इससे आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कम टाइम में।
Cool. So that sums up very good thing regarding descriptive. One more thing which you mentioned that you took EduTap Phase 2 crash course or the entire हाँ crash course. हाँ सर, So that एडुटैप happened. फेज Sorry, 2 please. Phase 2. Okay, and that happened after notification, right? आफ्टर प्री रिजल्ट, Okay, आफ्टर after. प्री एग्जाम, आफ्टर प्री एग्जाम. Okay, so after pre-exam you purchase EduTap Phase 2 course, crash course. या Okay. So is it advisable for any student to start its preparation from scratch once the notification comes, or do they need to have certain, I would say, more hours to put in or more months to put in? I think after notification it is tough to cover the static economics as well as FM. So Okay. if you are willing to start the preparation, you should start early. It will be a great advantage, So those who because are, yes, it yes, will please take time, continue. Hmm. because it will take time to cover the static economics also, no? Because Okay. Indian economy, to understand Indian economy, you need to cover the static concepts. Okay. So those who are targeting for RBI Grade B 2024, that is the next year cycle. So correctly, you think it is the right time to start, or should they delay it? Like many people, they are like कि notification आ जाएगा तब पढ़ेंगे. So what is the correct strategy for that domain? Sir, as they say, the right time to start is now. So if Okay, you are so planning hmm, to give the exam next year, so you hmm. should start as early as possible. So the viewers, please take a note of it. If you are very serious for RBI 2024, or for, I would say, for financial year 2025 rather, you have to start from right now only, because that is the most important thing which Mr. Ankit is prescribing to you. Now let's move to FM, that is finance and management. So first, did the phase 2 course of EduTap helped you? If yes, then what were the overall strategy? How did your journey regarding finance and management continued with? Sir, I think my preparation for finance and management was through the summary sheets the EduTap provided in that phase 2 crash course. Hmm. And I had the summary sheets from last year also. Last year also I had taken that same crash course. So Okay. before prelims, I had studied a bit from there. And after prelims, I went through the those summary sheets, and I prepared FM solely through that. And after that, as the exam came near, I saw your live sessions. Not not means every time I was not watching live, but after you posted the recorded session, I was going through the session in the 2x speed, so that Okay. the session Yes, gets yes. covered in lesser time. So were the So the sessions way good? I think those sessions were very nice. I Okay. think I'll be scoring good in FM, and Hmm. one of the reason for that will be the sessions on FM you take. Means Hmm. the way you teach FM through connections. Hmm. That strategy is very good. Means So yeah. in one question, एक Hmm. क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन और वो कनेक्ट कर देते हो, तो हाँ वो जी. काफी सही तरीका है सीखने का. आपने दिल खुश कर दिया. ये बोल के that we all teachers at EduTap try our best, but currently, like as you mentioned regarding Kritika ma'am, regarding me as well, and definitely we put a lot of efforts to make sure that we give certain final selections in RBI Grade B domain. So thank you so much, Ankit, for all those kind words. But once it comes to finance and management, I want to dig deeper, because many students, like for example, once it comes to engineering backgrounds, once it comes to agriculture backgrounds, hotel management students, they all ask me like daily, sir, is there any shortcut for finance and management? Can I prepare finance and management in 30 days? Can I complete management in 15 days? Sir, what are some important topics? So I want to put this question to you. इज देयर एनी शॉर्टकट फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट? क्या हम लोग फाइनेंस एंड मैनेजमेंट कोई शॉर्टकट लेके कर सकते हैं? शॉर्टकट सर, शॉर्टकट तो वही है कि सिलेबस कंप्लीट किया जाए किसी भी हाँ. तरीके से. शॉर्टकट में या तो ज्यादा पढ़ के कम दिन में कर लो, बट सिलेबस पूरा करना ही पड़ेगा. सिलेबस पूरा करना पड़ेगा. हाँ. हाँ. और दूसरी बात ये है कि फाइनेंस मैनेजमेंट में ना नंबर ज्यादा आते हैं, हम्म. क्योंकि ईएसआई में बहुत ज्यादा नंबर पिछले सालों में हम्म. भी ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन हम्म. फाइनेंस मैनेजमेंट ज्यादा स्कोरिंग है. तो हम्म. अगर आपके फाइनेंस मैनेजमेंट में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल है. Do share your score with me once the actual results are out. I will be waiting to hear that, because definitely finance and management is very very scoring, because the syllabus is limited. In ESI the syllabus is kind of, I would say, too much unlimited. So आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है. So that is good. Now let's come to the last paper of phase 2, which is your
English descriptive. Okay, so English descriptive, many people take it very lightly. Is it good or not good? I think it depends on how you see your English preparation. If you see that you are reading the newspaper daily, Hmm. so you can wait for phase two and Hmm. then practice some essays and practice some pressy or Hmm. comprehension. But if you are seeing that your English preparation is not good, so you need to start reading the newspapers. I think by sole exercise of reading the newspapers, you can improve your English preparation by huge margin. So when it comes to English newspaper section, as you said, how much time did you invested in newspaper on everyday reading, or is it like alternative reading? What was that? I think means I was not giving as मतलब ऐसा नहीं था कि रोज ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ना है, लेकिन आई हैव दैट हैबिट फ्रॉम माय यूपीएससी प्रिपरेशन डेज कि आई जस्ट गो थ्रू इंडियन एक्सप्रेस वंस अ डे। तो जब भी टाइम मिल रहा है मैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स के थ्रू थोड़ा मतलब उसके थ्रू हो जाता हूँ। तो Mm-hmm. उससे मेरी इंग्लिश ठीक ठाक हो जाती है। Cool. And you mentioned Indian Express was the primary newspaper for you. यस सर। Cool. And that was because of your UPSC thing again. यस सर। Cool. So that is a good habit. Now, once it comes to English descriptive, and many, if you see the FM and ESI also, is related to somewhere descriptive component only. So first I need good tips from the topper itself, like how a particular student who is starting from scratch, कहाँ से वो स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे, और एक अच्छा जो एक मोमेंटम होता है डिस्क्रिप्टिव में, वो उसे कैसे मिलेगा? कैन यू प्लीज शेड सम लाइट ऑन दिस डिस्क्रिप्टिव गेम? डिस्क्रिप्टिव सर जैसे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी है, उसमें जो एसेज आते हैं दे आर मोर और लेस रिलेटेड टू जनरल स्टडीज। हम्म. So if you have prepared well for general studies, you won't find much difficulty in the content part of English essays. ओके. And then comes the structuring. So for structuring, if you are seeing any session on how to write essays, they'll tell you that you have to start with introduction, then body, then conclusion. And in introduction, you have to give some facts or some anecdotes and like this. So if you practice 3 4 essays before your exam, then you will get to know कि how to write a good essay. तो कंटेंट वाली जो बात है वो आपकी कवर हो जाएगी जीए से, जीए या जीएस से। और फिर जो स्ट्रक्चरिंग वाली बात है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, सो यू मीन टू सी कि कंटेंट आपको ज्यादा स्टैटिक और करंट अफेयर से मिल जाएगा, और हाँ। इतना तो पढ़ा ही होता है मैनेजमेंट में, तो पूरा ही करंट है, पूरा ही स्टैटिक है, सॉरी। हाँ। ओके, मैनेजमेंट तो फुल स्टैटिक है, और आप कह रहे हो कि फिर उसके बाद स्ट्रक्चरिंग देखनी पड़ेगी, हाँ लाइक सर। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है। हम्म. इंग्लिश जैसे इंग्लिश एसेज में आपका हम्म. प्रॉपर होना चाहिए इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, उसके ओके, बट मार्क्स। देखा जाए तो पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए? मतलब अगर आपको स्ट्रक्चर करना आता है तो यू कैन हम्म. मैनेज विद लेस कंटेंट, ओके. थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के, लेकिन हम्म. कंटेंट कुछ ना कुछ तो सर होना चाहिए। मतलब बिना वो तो कंटेंट। कंटेंट तो उसके पास तभी होगा जब उसके स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होंगे स्टैटिक में, राइट? यस सर। So if you have good static part plus some current affairs, then structuring can be done and it can be learned. Agreed? फॉर हाँ. मैनेजमेंट जैसे स्टैटिक पार्ट है और इस बार हाँ. क्वेश्चंस भी एकदम स्टैटिक के डायरेक्ट आए हुए थे। हाँ जी, जैसे तो इस इस, बार हाँ, just to हेनरी set फ्योल some context, Henry Fayol ocean model was asked, so क्वेश्चन that मॉडल। was very direct. यस, इट वाज वेरी डायरेक्ट। तो अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो आप श्योर शॉट रहिए कि वो वही क्वेश्चन आ सकता है, जैसा Okay, किताब में है वैसा ही लिखना है। cool. And क्या आपने जो ओशन वाला था, if I'm not wrong, it was of 15 marks of 600 words, if I'm remembering it correct. आपने 600 में से आपको याद है कितने वर्ड्स लिखे, या 600 के 600 ही लिख के आए थे पूरे? सर Like somewhere मुझे rough idea. एग्जैक्ट याद, सर अप्रोक्स 500 वर्ड्स लिखे शायद मैंने। ओके, हाँ। सो इट अगेन ब्रेक्स अ बैरियर, लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि 400 तो 400 पूरे लिखने हैं, 600 में 600 पूरे लिखने हैं। सो दैट इज नॉट द केस, इवन इफ यू आर राइटिंग बेयर मिनिमम, और इवन इफ यू आर राइटिंग ऑप्टिमम लिमिट, दैट इज फाइन. नाउ यस लेट्स कम टू, सॉरी, यस यस आई प्लीज. थिंक दे आर मोर फोकस्ड ऑन कंटेंट। Okay, they are more focused on content. And do you think like grammatical mistakes, spelling mistakes, all these cost you a big time? Like kind of थोड़ा सर ये मेहनत करनी चाहिए? इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ओके. ईएसआई और मैनेजमेंट में इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर हम्म. वो कुछ कुछ हो जाते हैं टाइपिंग करते हुए। ओके.
तो जितना तो कम उतना बढ़िया है. जितना कम उतना बढ़िया, लेकिन इंग्लिश में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। Okay, okay, okay. Nice. Now let's come to the interview part, the most uncertain thing. First, once you get to know that you have qualified phase 2, what was your level like? How did you start it for interview? What was the run up throughout the interview? बिकॉज इंटरव्यू से पहले ही एक जर्नी होती है, इंटरव्यू वाले दिन अलग से एक एपिसोड होता है, उसके बाद बात की अलग जर्नी है. सो वंस यू क्लियर द फेज टू टूवर्ड्स योर इंटरव्यू, लाइक व्हाट वाज द ओवरऑल गैप, आपने क्या क्या करा, how did you enrolled in the program of EduTap interview, what was the overall process, take me through that. Sir, after the phase two results came, actually I had also given NABARD interview last year, NABARD Grade A, and I Okay, had scored poorly in that interview, 15 out of the 15 out 50. of 50. Uh, Mm-hmm. so I was not very confident about the RBI interview. Therefore, before my interview, I took a leave for 10 to 12 days, and I Mm-hmm. came to my home to prepare. Mm. And then, luckily, at the same time, my sister also came to home, Okay, and I think my interview preparation, the whole uh, means the whole credit. credit, huh? The Mm. whole credit should go to my sister, Mm. because she worked on my confidence, my presentation, then my English speaking, and so the whole credit should go to my sister. And apart from that, the content part I prepared from RBI website, and the biodata which we submit to Mm. RBI, the questions related to that Mm. also I prepared thoroughly. And did you take any mock interviews with EduTap? Yeah, I took the mock interview with Raja sir, and I Mm. think it really helped me, because sir was very genuine in giving feedback, and also in giving confidence. So in the real interview, it helped me. Cool. So if you see on the coming Rakhi of the 2024, definitely you should gift a very good, I would say beautiful gift to your sister, so that She really because she has deserves. helped you a lot in the interview part. And that is Sir. where again the family angle comes into the picture. The more Yes. supportive the family, higher are the chances that you will get your job. Now let's go on the D day, that is of interview. First, let me know in which RBI office was your interview conducted. So my interview was at Guwahati office. Okay. So when it comes to RBI Guwahati, again, very beautiful place. How did the day go on? Like, what were the number? Like, can you recall some questions which was asked in interview? Hmm. I think questions were mainly from related to RBI, and then related to my work profile, because I was working. So they asked me about audit, Hmm. then the audit of banks, and then there were some questions on digitization, Okay. then some questions on HR questions on why you want to join, and Hmm. luckily there were no questions on engineering. So Cool. Because means I don't. engineering you have done way back, right? Yeah, After yeah, yeah. that, the TCS happened, then you have UPSC, then SSC, and Yes, then yes. RBI. So they didn't bother you much on the engineering. Yes, please I think continue. if you are working, so they will focus more on your work, means what Work you are ex. working in. Yeah. And if you are not working, then they will go to your that graduation part. Then you So, need to prepare the were there graduation. any technical questions like which you couldn't answer? Some technical questions, if you can recall. I think, sir, there were some questions like there were some pressure moments in which the board members they tried to pressurize. Means one answer I gave regarding digitization, and Mm-hmm. means I told that we are seeing more digitization, and the board member he started laughing that the currency in he gave me some figure that the currency in circulation has increased from this to this, and you are saying that digitization is increasing. So I told that, sir, I was saying on the basis of increase in number of UPI payments, Okay. and I told him the fact that in August we have more than 10 billion transactions. Mm-hmm. So, so he seemed some means someone satisfied, Mm-hmm. Somewhat satisfied. somewhat Okay. satisfied. Yeah. Cool, cool, cool. So definitely you have to give your view to the interview panel, and Yes. definitely if your view is validated with facts, validated with different views, they will definitely accept that. Now tell me, after giving your interview, what was the feeling like? Were you satisfied or were you not satisfied? Or were you like कि ठीक ठीक हुआ है?
हाँ सर, इंटरव्यू के बाद तो यही लग रहा था कि ठीक-ठीक हुआ है, क्योंकि Hmm. सम क्वेश्चंस वर देयर इन व्हिच आई थॉट दैट आई कुड हैव आंसर्ड इन अ बेटर वे। Hmm. जैसे कुछ फुल टॉसेस थी जिन पे छक्का Hmm. मारना चाहिए था, लेकिन हाँ हाँ. फ्लॉप कर दिया। इस टाइप Hmm. के कुछ क्वेश्चंस थे। फिर कुछ क्वेश्चंस थे कि जिनको अच्छे से आंसर किया था। तो ओके. सो वो ओवरऑल बैलेंस हो गया एक तरीके से. वो बैलेंस्ड इंटरव्यू था। बहुत अच्छा भी Hmm. नहीं बोल सकते, बहुत बेकार भी नहीं था। ओके. तो अ, Hmm. it was better than the NABARD one, but Hmm. now as the result has come Hmm. positive, so it is fine. And definitely you would have learned from the NABARD mistakes if I'm wrong, if I'm not wrong. Yes, sir. For Hmm. NABARD interview, actually, I did not prepare well. So the Okay. first learning was to prepare well for interview. Okay. So if you are going for interview, you must prepare. Hmm. So definitely the interview stuff was very, very good. Now after interview, definitely the final selection was out, and by God grace, you have been an RBI Grade B officer. Now that sums up my like the core part of interview. We have talked regarding phase one, phase two, as well as for interview. Now I will be asking certain journal questions. If you see your journey, like it started way back when you were graduated in 2015, then TCS for 2 years, then UPSC, like what kept you going? आपको यूं ही क्यों लगा कि मेरे को चलते जाना है? एट वन पर्टिकुलर मोमेंट आपको लगता है कि यार अब रुक जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, लाइफ में सेटल भी होना है, बहुत सारे काम भी करने हैं, तो आप लाइक अभी तक कैसे, मतलब यू आर स्टिल एनर्जेटिक फॉर आरबीआई? कैसे सब कुछ हुआ आपके साथ वो? आई थिंक सर आरबीआई यूपीएससी के बाद जब मैंने आरबीआई प्रिपरेशन शुरू की तो आरबीआई वाज अनफिनिश्ड टास्क टाइप का था. So I ओके. needed to get into RBI because of course it provides good status and money. हम्म. So that was the prime motivation. हम्म. And then जो आपका सपोर्ट होता है, फैमिली सपोर्ट, इट आल्सो प्लेज अ बिग रोल. या डेफिनेटली. एंड लाइक मेरे को अभी भी मतलब उसमें थोड़ा मैं डीप जाना चाहूंगा. लाइक आपके पास जॉब भी थी एसएससी की, राइट? यू आर वर्किंग and you would have been a good, like you still have a good government job if you see in Uttarakhand. But why RBI? Like क्यों ही आप आरबीआई के पीछे गए कि मेरे पास यू चलो एसएससी की जॉब है, यू कुड हैव गिवन अप राइट दैट मोमेंट, but why you went to RBI and that too in the third attempt? Many people quit in third, second attempt itself. You just kept on going with the third as well, and in third you have clicked all the boxes. Like वो why क्या था, that I am trying to search upon. सर आई थिंक वाई में जैसे चीजें आती हैं, स्टेटस वाली बात आती है, फिर हम्म. मनी वाली बात आती है, फिर हम्म. पियर्स वाली बात आती है, हाँ जी. कि फिर हम्म. एक्सपीरियंस वाली बात आती है कि वर्क एक्सपीरियंस कितना अच्छा होगा आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में. टोटली. तो वो मोटिवेशन रहता है कि आप ऑफिस से आने के बाद तुरंत पढ़ना शुरू कर देते हैं. Definitely. So I can, like, can you define yourself in one word? Like if someone asks you that who is Ankit, तो आप क्या define करोगे उसे? आई थिंक perseverant, doing hard Hmm. work over a period of time, not That. means not for small periods but Hmm. over a period of time. If you are Hmm. giving your best, if you are doing your duty Hmm. right, so results will come. So definitely that totally defines you. If that totally defines your personality as well. Very long journey. Congratulations on that. Few more questions, like journal questions, which I am taking. What was the role of social media in your life? Like maximum people, they are on Instagram, YouTube's, Facebook. Were you socially active? मैं सर सोशल मीडिया से तो मैं दूर ही हूँ. मुझे मतलब बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं लगती. ट्विटर पे Okay. मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ, मतलब Okay. सोशल मीडिया में ट्विटर. I follow Mhm. people on Twitter, and I think that is more relevant for me. And you followed marathons on YouTube as well. So you Yeah, followed some good stuff. for YouTube मतलब प्री के टाइम पे for revision I followed EduTap's marathon. So that is again good. Can you Yeah, please define like what was the relation of EduTap with you? Like, see, the journey of you have concluded. Now, definitely you will walk into RBI offices. Multiple job responsibilities will be given to you. But still, somewhere throughout your life, after 10 or 30 years, you, if you have to tell someone कि यार ये EduTap था, so what you will like to tell them कि यार EduTap में ये अच्छा है. What was the best thing according to you in EduTap? I think sir best thing in EduTap is content. The content they are providing is means even for mains I have prepared my FM entirely from EduTap summary sheets.
Hmm. and though they might seem ki they are concise and they might Hmm. leave some important information, but when you start giving answers in exam, Hmm. you feel that everything that was asked is from the summary sheets. So Hmm. अगर आप उसे ही ढंग से पढ़ लें तो Hmm. content is the means most strong part of EduTap. Other than that, the revision sessions they bring on YouTube. Uh, Hmm. क्योंकि for free I did not enroll in any course, but Okay. EduTap was also supporting me even during free Hmm. through YouTube. So Yeah. these are some points I would like to highlight about it. Cool. And were you like once you prepared your phase two crash course, what were your expectations? Were we able to satisfy your expectations or not? Actually, sir, for phase two, like I said, that I had very little time. So Hmm. I had belief that EduTap would provide good content, and Hmm. I just relied on that because I did Hmm. not had time to read 2 3 coaching Hmm. materials. So I just relied on EduTap, and Hmm. now the result has come positive. So I Hmm. can say that it was very good. So somewhere I can conclude everything like एक coaching पे believe करो, उसका सारा content अच्छे से पढ़ो. That is the overall thing which I think Mr. Ankit would like to tell. Now, just some wind up questions like for the coming generations, or I would say for the coming RBI 2024, 2025, and 2026. Give me three important tips for a journal student. Journal student means that who are targeting RBI Grade B journal post. How can they develop discipline? First of all, give me just three tips on that. Like discipline has to be there because throughout your journey, I can see that you are disciplined. So first, I think I will take discipline. Rest two you have to give me. डिसिप्लिन के साथ ही सर आता है फिर हार्ड वर्क, परसिस्टेंट हार्ड वर्क Hmm. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज Okay. इन शॉर्ट स्पैन्स तो हम लोग कर लेते हैं, Hmm. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवन व्हेन रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग यू नीड टू Hmm. गिव कीप गिविंग एग्जाम्स, Hmm. एंड देन comes practice. Hmm. Because oh, there's a saying that the more you sweat in peace, the less you bleed in war. So Nice. that is means the more you practice, the more likely environment you will face in the exam. So it will be better. You will perform better. So Hmm. discipline, hard work, or practice. That are the three important pillars according to Mr. Ankit. One last question on pressure. Like there are two types of pressure. First, which is given by external people, like मेरे दोस्त ने कार खरीद ली, मेरे दोस्त ने शादी कर ली, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे बोलते हैं. एक प्रेशर होता है जो हम लोग इंटरनली खुद बना लेते हैं हमारे ऊपर कि यार एडुटैप की समरी शीट्स बहुत बड़ी है, कंसेप्ट नोट्स बहुत बड़े हैं. सो हाउ डिड यू हैंडल द एक्सटर्नल प्रेशर? वाज देयर एनी एक्सटर्नल प्रेशर ऑन यू? नहीं सर, मतलब मेरा मेंटल स्पेस ऐसा नहीं है कि मैं हम्म. एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता हूँ। और हम्म. जो लोग ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी में निकलते हैं, वो हम्म. उनको मतलब ऐसा मेंटल स्पेस थोड़ा रखना पड़ेगा कि हम्म. बाहर जो हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होना है। सो और यू फिर नीड टू मेरी मेंटेन गुड मेंटल स्टेबिलिटी, और वो आपके लिए इसलिए थी क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव नहीं थे. सर्टेनली ट्विटर पे थे और यूट्यूब पे थे, बट दैट वाज रिलेटेड टू योर स्टडी पर्पस ओनली, राइट? हाँ सर, फिर मेरा जो ग्रुप है, मेरे जो हम्म. फ्रेंड्स हैं, फ्यू नेम्स अगर लूँ तो मनोज, आलोक, प्रीति एंड कुशल, दे मीन्स दे आर डेफिनेटली. गुड पीपल। हाँ, तो और उन सबको आपको थैंक यू बोलना चाहिए. लाइक बिल्कुल सर। डेफिनेटली बिकॉज ऑफ देम ओनली टुडे यू हैव रीच टू दिस पर्टिकुलर हाइट. यस। हाँ जी. तो एंड जो इससे इंटरनल प्रेशर आता है, जो इंटरनल प्रेशर आता है उसको कैसे हैंडल करना है? इंटरनल प्रेशर सर, उसका सबसे सही तरीका ये है कि आप मीन्स करते रहिए, हम्म. ताकि आपको बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम ना मिले। हम्म. जैसे मैं बोलूँगा कि आफ्टर 3 अनसक्सेसफुल यूपीएससी अटेम्प्ट्स हम्म. इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा था। तो एक थोड़ा-सा आपको सेल्फ रियलाइज़ेशन और थोड़ा-सा मतलब रियलिटी चेक करने की ज़रूरत होती है। हम्म. तो आप वो करिए, फिर बाकी एग्ज़ाम्स देने शुरू करिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत बनाइए खुद पे ना। हम्म. और कभी-कभी ये होता है कि हार्ड वर्क करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट द इंटेंजिबल फैक्टर्स। बहुत सारे इंटेंजिबल फैक्टर्स होते हैं सक्सेस में, जिनको हम हर बार क्वांटिफाई नहीं कर सकते। मतलब जैसे हम्म. अभी भी ये सक्सेस आ गई है, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, इससे ही हम्म. सक्सेस आई है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम्म. तो वो बहुत सारी इंटेंजिबल चीज़ें भी होती हैं। तो आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है,
तो थोड़ा सा सही टाइम का वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, वो Okay. चीजें सही होंगी अपने टाइम पे। So that is again a very quite learning from you. Now, Ankit, we will have to wind it up. Just give me one few lines for the future aspirants who wants to become RBI Grade B officer. Just few lines, and then after that we will conclude. आई थिंक सर वही दोबारा Mm-hmm. दैट इफ यू आर डूइंग योर ड्यूटी प्रॉपरली ऑफ Mm-hmm. preparing for the exam, honest hard work over a period of time, then results will surely follow. Okay, so honest hard work for a period of time. That sums up the interview by Mr. Ankit, who has cleared RBI Grade B 2023 with flying colors. From the entire team of EduTap, we again thank you, Mr. Ankit, for giving us the time and giving us all the valuable inputs. Congratulations one more time, and I wish you a very bright future in RBI. Thank you, sir. Thank you for giving me the platform. Anji, thank you, and this is where we end. Cool. थैंक यू सर। मजा आया अंकित? हाँ जी सर, सही हाँ था जी, आप। हाँ हाँ, बहुत अच्छा था, बल्कि आप बहुत खुल के बोल रहे थे, वो बहुत अच्छी चीज है। चलो, और अंकित, अब बस एंजॉय करो। आपको भी राइट। लास्ट में दोबारा थैंक्स। अरे एफएम। अंकित, कोई ना, आप फीडबैक अपनी भेजना hello@edutap पे। ठीक है सर। hello@edutap.co.in एक हमारी ईमेल आईडी है, उस पे भेजना फीडबैक। डेफिनेटली अंशी सर विल कम टू नो रिगार्डिंग एफएम। सो तब उनको पता चलेगा। आप कृतिका मैम का नेम भी ले सकते हो। व्हाट हैपेंस इज, लाइक वंस द स्टूडेंट टेक्स अ नेम, तब जाके हमें पता चलता है कि हमारा जो पढ़ाया लिखाया है वो काम आ रहा है। वरना ऐसे तो क्या होता है, अब जैसे मेरी 5:30 बजे फिर क्लास है, तो हम्म, क्लासेस चलती रहती आती रहती, बट डेफिनेटली वंस वी सी टॉपर्स लाइक यू, डेफिनेटली दैट मेक्स आवर डे। ओके, so do share your feedback after this interview. I will be waiting to hear it on a hello@edutap.co.in. Okay. ओके सर। Chalo, all the best. Have good life. Give regards to your family from my end, and I wish you a bright future ahead. Cool. थैंक यू सर। Chaliye, गुड all विशेस the फॉर best.